Yes, very good evening everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? Today's topic is all about the conflict. So before starting the class, please do like and share, subscribe everyone so we can start today's class. अच्छा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट. पर जल्दी सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट किया सके. बहुत छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट. Starting class within the very few minutes. जो बच्चे भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो बच्चे यूजीसी नेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्फ्लिक्ट. तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है. सो ऑल दोस कैंडिडेट हु आर joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since class 11 year I'm taking classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics, and I used to work with India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, Sharda. Mentored and guided more than 1,000 candidates for UGC NET in Commerce, Management and Economics. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. बहुत लंबे समय से लगातार UGC नेट की मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं. नेट टॉपर्स के रात को 8 बजे का कॉमर्स और रात को 10 बजे मैनेजमेंट का रेगुलर बैचेस चल रहे हैं. जो बच्चे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइन तैयारी कर रहे हैं, वो भी रात 10 बजे जुड़ सकते हैं. पिछले 15 दिनों से केवल स्टार्टिंग में हम लोग 1 महीने 1.5 महीने में वही सिलेबस कंप्लीट करेंगे जब तक राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का वंस विल बी कंप्लीट द राजस्थान एपी सिलेबस, आरपीएससी सिलेबस. उसके बाद बचा हुआ मैनेजमेंट का सिलेबस आगे कंप्लीट करेंगे. तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जिन्होंने भी नहीं लिया जल्दी से लीजिए. लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलर मिलने वाले बच्चों आपको. डेली लाइव क्लास में क्या मिलेगा? चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशंस, आस्क योर डाउट, आंसर पोल्स, हाल वाइल, सब कुछ ये क्लासेस गोइंग ऑन. उस लाइव क्लास में आपको सब कुछ पूछ सकते हैं. अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव टेस्ट मिलेंगे. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. लर्निंग ऐप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से जाकर, या आप अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. मैनेज गोल में NTA UGC नेट सर्च करिए. प्लस या आइकॉनिक में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. प्लस की अगर फीस की बात करें 13,750 रुपये फीस है. अगर मेरा कोड यहाँ पर डालेंगे AGS10 क्या डालेंगे? AGS10 अगर प्रोमो कोड डालेंगे तो 12,375 देना पड़ेगा. इसकी फीस 26,000 है तो आपको 23,400 रुपये देना पड़ेगा. तो 1 मार्च से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. डिस्काउंट भी 5% आ जाएगा मार्च से. अभी केवल 10% डिस्काउंट है. तो देखिए 13,750 रुपये फीस है, 26,000 रुपये. लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर भाई कोड AGS10 कोड यूज करते हैं तो 12,375 रुपये और 23,400 रुपये पे करने पड़ेंगे. ठीक है. तो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन में क्या मिलने वाला? लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल. आइकॉनिक की बात करें, पर्सनल कोचेस वुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, स्टडी प्लानर, वाई वीकली रिव्यू, स्टडी बूस्टर सेशंस विल बी देयर, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOPs और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल.
तो इकोनॉमी में थोड़ी पर्सनलाइज और कस्टमाइज सर्विस मिली, दैट इज द ओनली रीजन अनअकैडमी चार्जिंग द हायर प्राइसेस एज कंपेयर्ड। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आज कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम लोग बाद में बताएंगे कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कैसे करते हैं, वो अपने आप में एक लेक्चर है। It is an express struggle between at least two interdependent parties who perceive the incompatible goals, scare the resources, and interference from the other parties in achieving their goals. So, due to any problems, due to any misunderstandings, yeah, due to any incompatible in a goals, scarcity of the resources, संसाधनों की कमी, interference from the other parties in achieving the goals, it might lead to create a certain conflict between the two parties. The conflict is a process that begins when the one party perceives that another party is negatively affected or about to affect something that the first party cares about. Conflict is a class of interest. Conflict क्या होता है? Conflict is all about the class of interest. दो लोगों के बीच में class of interest की बात करेंगे। Values, action, views और direction। उन्होंने 1985 में रिसर्च पेपर लिखा था। उन्होंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया है? It is all about the class of the interest between the two parties, class of values, class of actions, class of views, class of directions. And the conflict refers to the existence of that class. Conflict is a initiated the instant class occurs. Generally, there are diverse interests and the contrary views behind a conflict. लेकिन दुनिया के हर इंसान का they are having their own personalities. हर इंसान का अलग व्यक्तित्व है, अलग एटीट्यूड है, अलग परसेप्शन है, अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, अलग लीडरशिप स्टाइल होता है। तो कहना कि दुनिया के अलग अलग इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व की तरह व्यक्तित्व होता है, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो दैट इज अ थिंग ड्यू टू द सर्टेन डिफरेंट डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों की रुचि है। देयर आर डाइवर्स इंटरेस्ट, कॉन्ट्रेरी व्यूज बिहाइंड ए कॉन्फ्लिक्ट व्हिच आर रिवील्ड कब होता है? व्हेन पीपल लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट अलोन। कॉन्फ्लिक्ट इज एन आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल interests, interaction, and a disagreement. It can be settled by the identifying and neutralizing the etological factors. Once conflict is concluded, it can provoke a positive change in the organization. सीधी सी बात, अगर एक संस्था में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज आप नहीं ला सकते हैं। तो वी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ रीजंस जिनकी कारणों की वजह से एक संस्था के अंदर, एक संगठन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। वर्किंग टुगेदर इज नॉट ऑलवेज इजी। एक साथ काम करना हमेशा सरल नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की हर इंसान की बात करिए, एक संगठन की बात करिए, इट इज इन अ पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। सुबह से घर से निकलिए, शाम तक ही वापस आइए, तो बोले आप रिक्शे वाले से अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऑटो वाले से अलग हो रहा है, मेट्रो में जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर सीट के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ द एवरीवन लाइफ, एवरीडे लाइफ ऑफ एवरीवन लाइफ एंड एवरीडे ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल्स की बात करिए, पहले ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए। जे.डब्ल्यू. थॉमस ने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिफाइन किया, उसको समझने की कोशिश करिए। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी इज नेगेटिवली अफेक्टेड। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर पार्टी इज नेगेटिवली अफेक्ट और अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट, या तो नेगेटिवली प्रभावित हुई है या नेगेटिवली अफेक्ट होने वाली, अबाउट टू बी नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी cares about. So conflict is a process that always begins from the one party perceive that another party is negatively affected or about to be negatively affect something that the first party cares about. सीधी सी बात हो गई होगा। And this definition describes that point of is an ongoing activity when an interaction crosses over to become an inter-party conflict. Conflict is a process in which is an effort is purposefully made by the one person or unit to block another that result in a frustrating the attainment of the other's goal or furthering of his or her interest. तो कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं लगातार एक इंसान जानबूझकर कभी इंटेंशनली किसी पर्पस के लिए करता है ताकि वो सामने वाला अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव ना कर पाए। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इन डिस्कशन ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इट इज नेसेसरी टू डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन।
कंपटीशन अलग चीज है, कॉन्फ्लिक्ट अलग चीज है. कॉन्फ्लिक्ट अकर्स when two or more parties pursue two or more mutually exclusive goal. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? दो या दो से ज्यादा इंसान एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल बी राइज. आपको एक ही चीज है, आपको मिलना एक ही लोगों को है वो. अब दो लोग कहीं ना कहीं द टू पर्सन या 2 3 4 पर्सन आर पैरेलली ट्राई टू गेट इट दोस पर्टिकुलर थिंग्स. तो 2 4 5 इंसान एक चीज को पाने के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऑलवेज देयर इज अ चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज आउट ऑफ द टू परसेप्शंस. दो लोगों की अलग अलग लोगों की परसेप्शंस पे से कॉन्फ्लिक्ट होता है. कॉन्फ्लिक्ट रिफर टू द डेलिबरेट बिहेवियर. कभी कभार जानबूझ कर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट लोग क्रिएट करते हैं. What are the sources of conflict? There are 3 levels of conflict in the life of the organization. For every level, there are different sources. Conflict समझ में आ गया आप लोगों को? ये बताइए पहले. ठीक है, आगे बढ़े. कोई डाउट किसी को? कॉन्फ्लिक्ट, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ ही गया होगा ना. आगे बात करें सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एवरी लेवल देयर आर डिफरेंट सोर्सेज. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल. अराइज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन. आपस अपने खुद से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. न्यूमरस गोल्स, यू जस्ट वांट टू बी अचीव द न्यूमरस गोल्स इन अ वन टाइम्स. ऑटोमेटिकली देयर विल बी चांस, मतलब विद इन द मतलब अपने आप खुद से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. That is called intrapersonal conflict. So interpersonal conflict refers to the conflict within the individuals. It arises from the frustration. Numerous goals will require the equal attention, but it's not possible to devote in goals having the both positive and the negative aspect. सीधी सी बात है. अब एक टाइम में सभी गोल्स को आप अचीव नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन, आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. इंटरपर्सनल की बात करेंगे तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एटलीस्ट 2 और मोर इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप. एक ग्रुप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तब देयर इज अ चांसेस ऑफ द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. एंड तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल विद अ ग्रुप. इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन अ पर्सनालिटीज, परसेप्शंस, टेम्परामेंट्स, वैल्यूज, सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड रोल एम्बिग्यूटीज. सीधी सी बात है. So automatically the persons, there are numerous number of persons in working in a one group. They are having their own personality, they are having their own perceptions, temperaments, values, socio-culture factors. If suppose that there is a role ambiguities भी है, तो automatically there is a chances of conflict. Intergroup, दो अलग अलग एक ग्रुप, एक बी सी. There are 3 ग्रुप है, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप. तो अलग अलग ग्रुप के बीच में हो रहा है, that is called intergroup. It is also called organizational conflict. It refers to the conflict between the 2 or more sections, group or department in organizations. Conflict between group is frequent and highly visible. मार्केटिंग वालों का HR से हो गया, HR वालों का फाइनेंस हो गया, फाइनेंस वालों का ऑपरेशंस हो गया, ऑपरेशन वालों का प्रोडक्शंस हो गया. दैट इज कॉल्ड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. The reasons for intergroup conflict are mainly such as task interdependency. It refers to the extent which 2 departments depend on the each other for information, compliance and the assistance. जैसे कि प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है. मार्केटिंग वाले तो कहीं ना कहीं ऑर्डर लिया है मार्केट से, अब मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है कि चलो ठीक है, प्रोडक्शन वाले अगर प्रोड्यूस करेंगे तभी तो मार्केटिंग वाले बेचेंगे. तो टास्क इंटरडिपेंडेंसी के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू द विच टू डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन द ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन, compliance and the assistance. Task ambiguity. Another important source of intergroup conflict arises when it is not clear which group is responsible for performing which task. तो अगर मान लो कोई टास्क एम्बिग्यूटी, कौन क्या काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, तो आपको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग वाला काम क्या करेगा, सेल्स वाला क्या काम करेगा. गोल इनकम्पेटिबिलिटी. द गोल्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्लैश विद ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस. अगर 2 डिपार्टमेंट का गोल आपस में क्लैश करा तो इट माइट क्रिएट द सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट.
कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिमिटेड and every department tries to secure the maximum share in that, it results in a conflict. competitive reward system, अगर एक संस्था के अंदर, संगठन के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम बहुत कॉम्पिटिटिव है, इतना करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिव है इन्वायरमेंट. if there is a system in the organization that reward will be given on the basis of the competitive performance, it will result in a conflict. सब अपना अपने कहीं ना कहीं जब अपने अपने बारे में सोचेंगे, everybody will try to achieve their own objective. Changing views of a conflict. Conflict exists in the organization from the very beginning, but attitudes toward the conflict has been changed. ट्रेडिशनल व्यू क्या था कॉन्फ्लिक्ट का, मॉडर्न व्यू क्या है? उस समय कहते थे कॉन्फ्लिक्ट इज अवॉइडेबल, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल. कॉजेस बाय द मैनेजमेंट एरर्स इन डिजाइनिंग सिचुएशंस. तो ट्रेडिशनल व्यू था तो कॉन्फ्लिक्ट को कहते थे कि मैनेजमेंट एरर की वजह से जो डिजाइनिंग सिचुएशन जो डिजाइन की उसके चक्कर में कारण होते थे कॉन्फ्लिक्ट के. Caused by the either organizational structure, unavoidable differences in a goal, difference in values, goals, disturb the organization and prevent the optimal performance. It contributes and detract from the organizational performance. Task of management is to manage the conflict. Task of management is to manage the level of conflict. Optimal organizational performance requires the removal of conflict. Optimal organizational performance requires a moderate level of conflict. तो मॉडर्न व्यू एक अलग तरीके से सोचता है कॉन्फ्लिक्ट को, ट्रेडिशनल व्यू अलग तरीके से समझता है. अब बात करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज द एम्प्लॉय टू कम्पीट विच अदर. रिवॉर्ड सिस्टम कहीं ना कहीं आदमी इनकरेज तो करते हैं एम्प्लॉयज को कि आपस में कम्पीट करिए. कॉम्पिटिशन में भी इधर ओपन और क्लोज, ओपन भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन क्लोज भी हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली इम्प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम और रीऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज क्रिएट द सम कॉन्फ्लिक्ट. Organization conflict is a situation of the close or win-lose competition in which parties try to keep each other from attaining their goals. There are mainly three levels of organization conflict. It may exist between individuals, or between the individuals and group or group in a same organization. So every intergroup conflict passes through the 5 stages: latent conflict, perceived conflict, felt conflict, manifest conflict, and conflict aftermath. So every intergroup conflict passes through the 5 stages. There are 5 basic stages of the conflict we have. Latent conflict क्या था? This is the first stage in which only potential opposition exists between the parties. This means all causes of conflict lying the hidden. Yeah. So this is the very first stage in which only potential opposition exists between the parties. This means all causes of conflict lying the hidden. परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट. इन दिस स्टेज पार्टीज बिकम द अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. ऐसी स्टेज में पार्टीज को पता होता है कॉन्फ्लिक्ट. पार्टीज बिकम द अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड दे बिगिन परसीविंग द कॉन्फ्लिक्ट. फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इन दिस स्टेज पार्टीज बिकम द इमोशनली इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड फीलिंग द कॉन्फ्लिक्ट. इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को फील करना स्टार्ट कर देते हैं. मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इन दिस स्टेज पार्टीज बिगिन टू गिव द एक्सप्रेशन देयर हॉस्टाइल बिहेवियर. सम एक्सप्रेशन द हॉस्टाइल बिहेवियर आर लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज द इंटरेक्शन एंड ब्रेक डाउन द वर्क फ्लो. मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अपने एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से डिपार्टमेंट वाले बात करना बंद कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया. कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ की बात है. कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट डिस्क्रीट सिचुएशन विद अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड. दिस आर द 5 स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो प्राइमरी स्टेज ये है, लोअर स्टेज वो है, और हायर स्टेज कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ. So what are the functional aspect of the conflict क्या है? Functional conflict refers to the confrontation between the two ideas, goals and parties that improve the employees and organizational performance. ठीक है. The benefit of the conflict is following. Conflict increase awareness of what, who and how. Conflict motivates the organization members to consider the problem. Conflict promotes the changes. बदलाव लाता है conflict. Conflict enhance the morale and the cohesion. High quality decision result when person express their opposing the views and perspective. Conflict stimulates the interest and the creativity in the organizations. Conflict add to the fun of working with others when not taken seriously. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. किसी को कोई डाउट हो जल्दी बताइए यहाँ तक.
यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? चलो खत्म करते जल्दी से। डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो डिजायरेबल, बट विदाउट एन इफेक्टिव मीन्स फॉर हैंडलिंग इट, conflict can tear the relationship apart and interfere with the exchange of ideas, information, and resources in group between the department. Dysfunctional conflict hinders and prevent the organizational goals from being achieved. So dysfunctional conflict is all about the कि अगर डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अगर हैंडल नहीं करेंगे ठीक से, फिर सम टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज द एम्प्लॉय assert their demand for increased share in the organization reward such as position, acknowledgement, appreciation, monetary benefit, and independency. When management faces the conflict with many forces from the outside the organization such as government, unions, other coercive group which may impose restrictions on the manager activities. तो कई सारे कारण हैं कॉन्फ्लिक्ट के। वो आपकी डिमांड बढ़ गई, पोजीशन इंक्रीज करना, एक्नॉलेजमेंट हो गया, अप्रिसिएशन चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। The conflict emerged from the more than one sources, so their true origin may be hard to identify. Important initiators of conflict situations include people disagree. People disagree for a number of reasons. कौन कौन से reason? They see things differently because of difference in the understanding of the viewpoint. Because सबकी अपनी अपनी समझदारी, that is the only reason they are observing the things in a different way. Most of these differences are usually not important, but personality differences or the classes in the emotions need may cause the conflict. Conflict arises when two groups or individuals interacting in the same situation see the situation differently because of different set of settings, information pertaining to the universe, awareness, background, disposition, reasons for outlook. In a particular mood, individual think and perceive in a certain manner. For example, the half full glass of one individual can be half empty to the another. Obviously, both the individuals can be the same thing, but they do the differently owing to the contrasting the perceptions and dispositions. ना एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, कोई कह रहा आधा ग्लास भरा है, कोई कहता आधा ग्लास खाली है। बात तो सेम ही करें, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। Peoples have the different styles, principles, values, beliefs, slogans which determine their choice in the objective. When choices contradict, people want different things that can create conflict situations. For example, risk-taking managers would be in a conflict with a risk-minimizing supervisor who believes a firm control and well-keep. People have a different ideological and philosophical outlook, and in the case of the different political parties, their concept, objective, and the ways of reacting to the various situations are different. This often creates the conflict among them. तो कई सारे कारण हैं। Conflict situation can arise because people have a different status. When people at a higher levels in the organization feels indigent about suggestions for the change put forward for their subordinate or associate. अगर हायर लेवल पर है तो अपने नीचे वाले लोगों की सबऑर्डिनेट एसोसिएट्स उनकी बात सुनना पसंद नहीं करता है। People have different thinking styles which encourage them to disagree, lead into conflict situations. Certain thinking style may be useful for certain purpose, but ineffectual or even perilous in other situations. People are supposed to disagree under particular conditions such as sport, where conflict is necessary, not pleasurable. People are concerned with the fear, forces, fairness, and fun. Fear related to the imaginary, concern about something which might happen in the future. One may fear setback, disgrace, repulsion, hindrance which can lead to the conflict situation. कई सारे conflict के कारण है, बहुत सारे कारण है conflict के।
So force is a necessary ingredient of any conflict situation. Force may be ethical or emotional. It could be withdrawal or cooperation with the approval. This force is an instrumental in generating, strengthening, and terminating conflict. And next, fairness refers to the individual sense of what is right and what is not wrong. The fundamental factor learned in early childhood. This sense of fairness determines the moral value of an individual. Will have the different moral values and accordingly appreciate a situation in a different ways, creating the conflict situation. Fund or cost can cause the conflict. पैसा भी कहीं ना कहीं conflict create कर सकता है. But also force a conclusion through the acceptable to the conflicting party. The cost of being in a conflict may be measurable or immeasurable, being expressed in terms of human lives, suffering, diversion of skilled labor, neglect or loss of moral and self-esteem. अब आया टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. Interfaces of the organizational functions can occur along with the vertical and the horizontal dimensions of the organization. Vertical, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से लोअर लेवल. होरिजोनटल हो गया कि मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर ऑपरेशन, मैनेजर रिसर्च, मैनेजर HR, मैनेजर फाइनेंस. दैट इज कॉल्ड होरिजोनटल. वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट. हॉरिजॉन्टल बिटवीन द डिपार्टमेंट इन द वर्क ग्रुप. फिर बात करते हैं इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. अर्ली स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. Ways of doing tasks or reaching the group goals. Intra-group conflict between two or more group. फिर इंट्रापर्सनल बात करते हैं between two or more peoples. Differences in view about what should be done. लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, कैसे काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए. Effort to get the more resources. Differences in the orientation to work and time in different part of the organizations. This is all about today's lecture. Anyone is having any doubt, they may ask any question to me. Thank you so much for joining. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज जल्दी से. कोई डाउट है तो बताइए जरा. वी हैव टू बी conclude today's class. किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताइए. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी. देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया है. अगर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी में हुआ लेकिन आप लोग पूछ लीजिएगा, टाइम है. दोबारा हम हर टॉपिक दोबारा कंप्लीट करेंगे. फिर बताइए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. कॉन्फ्लिक्ट इज द क्लास ऑफ द इंटरेस्ट, वैल्यूज, एक्शंस, व्यूज एंड डायरेक्शंस. डी बॉर्नर ने 1985 में दिया. कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट क्लासेस. कॉन्फ्लिक्ट इज इनिशिएटेड द इंस्टेंट क्लास अकर्स. मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया. वर्किंग टुगेदर इज नॉट ऑलवेज इजी. इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. According to J.W. Thomas, conflict is a process that begins when one party perceives that another party negatively affected or about to be negatively affect something that the first party cares about. The nature of the conflict is different from the competition. Conflict occurs when two or more parties pursue two or more mutually exclusive goals. Conflict arises of the two or out of the two perception. Conflict refers to the deliberately behaviors. The sources of the conflict बताया. Intrapersonal conflict, interpersonal conflict, and intergroup conflict. The reason for intergroup conflict many such as task interdependency, task ambiguities, goal incompatibilities, competition for the limited resources होते हैं. competitive reward system एक संस्था में इसी चक्कर में भी conflict होता है. फिर हमने बताया चेंजिंग व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता था, मॉडर्न व्यू. ट्रेडिशनल व्यू कहता था कि कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मॉडर्न व्यू कहता है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते थे.
फिर लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हमने लेटेंट बताया, परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। लेटेंट होता है कि मेरी फर्स्ट स्टेज है, परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट। फिर फंक्शंस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बताया हमने, फिर डाई फंक्शनल बताया, रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई सारे कारण बताए, बहुत सारे कारणों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद बताया टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को बताया। This is all about the today's lecture. Last time I'm just asking to you, anybody is having any doubt, please to ask. Otherwise, we have to be concluded today's class. Nobody is having any doubts. So shall we conclude today's class?